Hello, my dear student. Welcome you here in this lecture number 68 for that topic body, fluids and circulation. Now we have been learning very important article, that is the human heart. In the last video, you should refer that we have given the general informations regarding the human heart, that what is the size and the shape and location and the coverings of that human heart. So do refer that we everybody are having that single human heart there, no doubt, which is of the size of clenched fist. ये जो फिस्ट है हमारी, उसके साइज का हार्ट हमारा रहता है. ओके, and that is placed all along the mid ventral line in the thoracic cage in between the two lungs, but slightly tilted towards the left side. और ये हार्ट जो है वो मेसोडर्मल ओरिजिन का है. ओके, now regarding the structure of heart we have to go in detail. First of all, I would like to explain you the external features of the human heart as visible in the ventral view. ये सामने से जब हम ऐसा थोरेसिक केज हमारा डिसेक्ट कर लेंगे, देखेंगे, हनुमान ने, वीर हनुमान ने जैसा दिखाया था वैसा ब्रीफ केज को बाजू करके अगर देखेंगे तो जो पोजीशन में हार्ट दिखेगा हमको, that tilted towards the left, so that is like this. This is called the ventral view of the human heart. Okay, and in this ventral view of the human heart we are going to learn the external features there. Okay, one of the very important feature of the that human heart is that it is four chambered. We are having four chambered heart, remember. And which are that four chambers? Right atrium, left atrium, right ventricle, left ventricle. ओके, ये राइट एट्रियम है, ये लेफ्ट एट्रियम है. अब पहले मैं आपको इसको क्लियर कर देता हूं. ये बायोलॉजिकल फिगर जो होते हैं उसमें राइट और लेफ्ट जो है, जो एक्चुअल बॉडी में है वो दिखाते हैं. हमारा मैथमेटिकल इक्वेशन अगर आप देखते हैं, समझो केमिकल इक्वेशन देख लो कोई भी. ओके, देन वील सी दैट A plus B giving C plus D. Okay, we say that this is the left hand, this is the right hand side. Okay, RHS मैथमेटिकल इक्वेशन में, और ये जो है वो LHS है. ये राइट है क्योंकि हम लिखते टाइम राइट में जाता है वो. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द राइट हैंड साइड, प्रोडक्ट का साइड जो है वो. तो उस हिसाब से अगर देखेंगे तो आप कहेंगे सर ने कुछ भी उल्टा लिखा है, ये तो राइट साइड है, ये राइट एट्रियम होना चाहिए, ये लेफ्ट एट्रियम होना चाहिए, isn't it? If you go according to the mathematical equations or chemical equations, right hand side, left hand side is given there as per the that direction of our hand which is writing. Okay, तो वो गलत, ये यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है. तो इसलिए बचपन से मुझे राइट और लेफ्ट का बहुत ही कंफ्यूजन है. पर्टिकुलरली वो न्यूज़पेपर में जो आते हैं ना, एक आधा फोटो दिखाया जाता है, उसमें 8-10 लोग रहते हैं और उसमें दाएं से इस तरफ आने वाले, बाएं से नंबर 4, लाइक दिस. वो कभी ध्यान में नहीं आता है राइट लेफ्ट का. तो यहाँ पे और एड्रेस तो किसी ने मुझे पूछना नहीं, क्योंकि जो है बिल्कुल मैं उल्टा बता देता हूँ. राइट को जाना है तो मैं बहुत बता देता हूँ, आप लेफ्ट को चले जाओ. ये क्यों होता है मेरे साथ मुझे मालूम नहीं, बट राइट एंड लेफ्ट कॉम्बिनेशंस ऑलवेज आई गेट पजल. तो इसलिए मैं चाहता हूँ आपको भी ये पजल नहीं होना चाहिए. दैट्स व्हाई आई एक्सप्लेन दिस राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड. नाउ ह्यूमन हार्ट इज फोर चेम्बर्ड, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, right ventricle and left ventricle. Particularly we can say that atria are also known as auricles. Atria or auricles, right auricle, left auricle, like this. Okay, they are auricles. Then another very important thing is that atria are anterior. Anterior chambers जो है वो atria है, and ventricles are posterior chambers. Ventricles जो है वो posterior chambers है. Very simple. Then another important thing is that atria are smaller chambers.
and ventricles are larger chambers. वेंट्रिकल्स लार्जर चेम्बर्स है, और इसमें भी हमें मालूम होना चाहिए दैट लेफ्ट वेंट्रिकल इज लार्जेस्ट चेम्बर ऑफ ह्यूमन हार्ट इज लेफ्ट वेंट्रिकल. ओके, एंड स्मॉलेस्ट जो है वो लेफ्ट एट्रियम. लेफ्ट एट्रियम इज स्मॉलेस्ट चेम्बर. So this we have to remember for the sake of what you say that MCQs of NEET. The smallest chamber of human heart. तो उसमें चारों भी नाम दिए थे, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल. करेक्ट आंसर स्मॉलेस्ट चेम्बर का क्या आता है? लेफ्ट एट्रियम, ये वाला. ओके, एंड लार्जेस्ट चेम्बर है वो पर्टिकुलरली लेफ्ट वेंट्रिकल है. ओके, then another very important thing is that atria are blood receiving chambers. ये जो atria है they are blood receiving chambers. दोनों भी atria. and ventricles जो है वो blood pumping chambers है. ventricles are blood pumping chambers. That's why what happened there, that atria have thin wall. Atria as compared to ventricles have thin wall. They are thin walled, and ventricles have maximum thick wall. Ventricles have thick wall because they have to pump, and that wall is made up of what kind of muscles? You know, cardiac muscles, specialized muscles. And one of the very important thing is that these cardiac muscles are immune to fatigue. That they are so strong that they never undergo tiredness. Okay, lifelong they work. तो ये basic information जो है पहले collect कर लो. That very important information. Remember, I have written all the points here. Please refer that. That human heart is 4 chambered. They are like that: right atrium, left atrium, right ventricle, left ventricle. The atria are anterior chambers. They are also called as auricles. ऊपरी हिस्से में जो है वो एट्रिया है, और नीचे जो है posterior chambers जो है वो ventricles है, and ventricles are posterior chamber. Then atria are smaller, ventricles are larger. दिखता है यहाँ पे atria small chambers है, ventricles are larger. Another very important thing is that atria are thin walled and ventricles are thick walled. क्योंकि एट्रिया को ब्लड रिसीव करना है. एट्रिया आर ब्लड रिसीविंग चेम्बर्स एंड वेंट्रिकल्स आर ब्लड पंपिंग चेम्बर्स. ओके, तो ये इतने पॉइंट्स जरूर ध्यान में रखो. स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट वो भी ध्यान में रखो. स्मॉलेस्ट चेम्बर इज नो डाउट दैट लेफ्ट एट्रियम, एंड लार्जेस्ट चेम्बर इज लेफ्ट वेंट्रिकल. अब जो कनेक्शन है वो भी हमें ध्यान में रखना है, बिकॉज इन द इंटरनल स्ट्रक्चर दैट वी हैव टू रिफ्लेक्ट अगेन, वी हैव टू यूज अगेन. ओके, now right atrium is receiving the deoxygenated blood through superior vena cava and inferior vena cava. That vena cava are formed by union of all the veins collecting deoxygenated blood from different parts of body. तो ऊपरी हिस्से जो भी है, very important part of the face and that head region. Okay, brain से लेकर all sense organs are here maximum. Okay, तो उनसे डीऑक्सीनेटेड ब्लड कलेक्ट करने का है, वो काम अलग अलग वेन करती है. ओके, एंड देन दे आर ज्वाइनिंग टुगेदर टू फॉर्म द सुपीरियर वेना cava, and that opens separately into the right atrium. Then inferior vena cava is formed by union of all veins collecting blood from lower parts of the body. हार्ट के लेवल से नीचे जो है हर एक ऑर्गन से एक एक वेन आती है, एंड दे ऑल गेट कलेक्टेड टू फॉर्म दिस इंफीरियर वेना cava, and that opens there into the right atrium. Left atrium is receiving 4 pulmonary veins, and they are collecting the oxygenated blood from pair of lungs. 2 आते हैं लेफ्ट साइड से, 2 आते हैं राइट साइड से. 2 pulmonary veins are coming from right side and 2 are coming from left side. ये यहाँ पे कट करके दिखाया मैंने, या ऐसे इधर से आए हैं, because one lung is on this side, one is on this side.
they are bringing the oxygenated blood. Then a large blood vessel, in fact the largest, known as aorta, is arising from the, what is it, that left ventricle. आप कहेंगे ये तो राइट में दिखाया आपने, लेकिन ऐसा टर्म है उसको, ओके, तो इंटरनल स्ट्रक्चर में दिखेगा आपको. दैट इज पर्टिकुलरली connected with the left ventricle. Left ventricle opens into the aorta, and aorta is the origin of arterial system of our body, from where the blood is supplied to all parts of our body through the different arteries. Okay. Then another very important thing is that pulmonary trunk, right and left. ये left pulmonary trunk है, तो ये right pulmonary trunk है. This is right pulmonary trunk. Okay, ये जो pulmonary trunk मैंने लिखा है, right pulmonary trunk, ये left pulmonary trunk. Okay, and they are carrying the deoxygenated blood to the pair of lungs for purification. So very interesting. ये connections भी ध्यान में रखो. यहाँ पे superior vena क्या हुआ, inferior vena क्या हुआ, opening into the right atrium, all four pulmonary veins opening into the left atrium. Then from aorta, that left ventricle, aorta is arising, and from right ventricle pulmonary trunks are arising. और यहाँ पे इंटरनली हम देखने वाले हैं, ये यहाँ पे हमें एक नाम दिया है लेफ्ट, दैट इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस, यानी ग्रूव होती है वो, दैट सेपरेट्स द टू चेम्बर्स देयर. ओके, ये दो चेम्बर्स को सेपरेट करती है. इंटरनली इंटर ऑरिकुलर सेप्टम इज आल्सो देयर. और एक बात ऐसी है, यहाँ पे आप देखने वाले हैं पर्टिकुलरली द ब्रांचेस देयर लाइक करोनरी आर्टरीज. ओके, करोनरी आर्टरीज नाम के ब्रांचेस आप देखेंगे. ओके, एंड these coronary arteries are that they are also arising from aorta, no doubt, and they are particularly carrying that oxygenated blood to the different muscles of the heart. ये coronary artery है. This is coronary artery. उसमें भी right and left होते हैं, and they are carrying the oxygenated blood to the wall of heart. तो करोनरी वेन भी वहां पे आपको दिखेगी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में. करोनरी वेन्स आर आल्सो देयर एंड दे आर कलेक्टिंग. ये करोनरी वेन्स भी आपको दिखेंगे यहाँ पे, दैट पर्टिकुलरली दे विल बी कलेक्टिंग व्हाट, deoxygenated blood from the different muscles of the that heart wall, from the heart wall. Okay, ये करोनरी वेन हो जाएगी. मैंने क्या किया है, जो deoxygenated part है वो particularly I have shown in the form of what, in the form of blue line, and that oxygenated part I have shown in the form of red line. Okay, so I am confident that you have understood this part very clearly. इसको ही आगे लेके जाएंगे तो internal structure आ जाता है. Okay, so that we shall learn in the next lecture. Thanks a lot.